रेनो क्विड एक हैचबैक जिसने एंट्री लेवल कार सेगमेंट को रेवोल्यूशनाइज किया है। अब तक ये सेगमेंट काफी कॉम्प्रोमाइज पे चलता था, या आपको कम स्पेस मिलेगी या फिर फीचर्स कम होंगे, नहीं तो इंजन का पावर कम होगा। पर रेनो क्विड के साथ ये सब चेंज हुआ। गाड़ी लॉन्च हुई थी 2015 में और 2016 में उन्होंने ऑलरेडी 1 लीटर इंजन इंट्रोड्यूस किया जो ज़्यादा पावरफुल है। पर अब ये 1 लीटर इंजन के साथ आपको आता है AMT ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन। क्या ये गाड़ी ऑटोमेटिक जैसी चलती है? लेट्स फाइंड आउट। क्विड EZ-R सिर्फ एक वेरिएंट है ऑफ द क्विड, हेंस देयर इज नो डिफरेंस इन द स्टाइलिंग कंपेयर्ड टू अदर क्विड्स। अगर आपको डिफरेंशिएट करना है, देयर इज अ वेरी टाइनी मिनी बैज एट द बैक ऑफ द कार which reads EZ-R. Side profile, front, everything is basically the same like the 1 liter. Kwid की खासियत यही है कि बाहर से it looks so appealing that why would Renault want to make any changes to it? This is a successful formula and Renault will want to stick to it and continue with it. Kwid AMT सिर्फ RXT variant पे available है, which means it comes only on the top of the line. Now, if you sit inside this cabin, ये काफी स्पेशियस है इन द फ्रंट रो। फर्स्ट थिंग यू नोटिस इज द टच स्क्रीन। 5 लाख के अंदर कौन टच स्क्रीन देता है? एट द सेम टाइम व्हाट यू गेट इज अ डिजिटल स्पीडोमीटर व्हिच इज अगेन समथिंग नॉट वेरी कॉमन। फ्रंट सीट्स का स्पेस काफी अच्छा है एंड द सीट्स हैव डिसेंट सपोर्ट टू। This is where most of the cars are good, but what they miss out on is features in the first row. Second row, ये काफी neglected area है। Competition में second row is very bad. I have no words for it. But Renault has definitely done a great job by not making the car too long and at the same time making the rear spacious. इसका door भी almost 90 degrees खुलता है, which makes it easy to walk into the car and even walk out. अब Kwid खाली पेट्रोल में आती है and it gets 300 liters of boot space. For those who need a cross check, ये एक सेगमेंट अबाव गाड़ियों के जितना है and in most of the cases it's even more. For those who are looking to fit a CNG, they can fit a CNG and still have space for the boot. Normally ये नहीं कर पाते in the cars that compete with the Kwid or even that are priced above it. Renault Kwid AMT सिर्फ 1 लीटर इंजन पे अवेलेबल है। It doesn't come on the 800cc. Unlike the conventional gearbox, इसमें stick नहीं है. This is a rotary dial on the center console which gets reverse, neutral and drive options. जिन्हें Tiptronic mode चाहिए, unfortunately that's not available. But there's nothing to worry about क्योंकि this transmission is far superior to most of the other AMTs that we have driven. At least it shifts faster and it's a lot more smoother with least amount of lag. Kwid का नया 1 लीटर इंजन काफी पेपी है and this adds on to it. ये एक 5-speed manual box है and to be honest, I'll prefer this over the manual transmission. Renault Kwid already एक successful product है. With the AMT being added, I think this is the best option to pick amongst all the Renault Kwid variants. इसकी pricing की बात की जाए, it will be just a shade under 5 lakhs for this variant on road in Mumbai. In terms of specifications, it gets everything. It's feature loaded, it's spacious and at the same time the engine is peppy with good fuel efficiency. एक downside है, no dual airbags and ABS. एक single driver airbag ही available है at the moment. That's all we have on this episode. Do not forget to give us a big thumbs up, share, subscribe and yes, give all the comments you have on this car. Any questions, we'll try and answer them as soon as we can. The launch of this car will happen before the 12th of November. So the official prices will be out till then. Hang on. If you subscribe and share our video on your social media and tag us, you get a chance to win Oakley sunglasses. So what are you waiting for? Subscribe. I'm leaving. Bye.